तो शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत शुरू हो चुकी है। 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत शुरू हो गई है। तकरीबन 4 साल बाद बाकायदा समाअत की शुरुआत हुई है। 5 जजों की आईनी बेंच कर रही है समाअत। जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम दिन, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काफी अहम दिन, जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफी अहम दिन, क्योंकि आज से ही समाअत इस पर शुरू हो रही है और ये आईनी बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इस पर समाअत शुरू करी है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत शुरू हुई है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में एक फैसला लेते हुए मरकज ने वहां से 370 को मनसूख किया था और मरकज का यह कहना है कि उसके बाद से जम्मू कश्मीर में हालात यकसर बदले हैं, तरक्की के कामों को काफी रफ्तार मिली है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो धारा 370 को मनसूख किए जाने के तरीक़ेकार से वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि ये गैर आईनी है, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। और इसीलिए कई पार्टियों ने और कई और दूसरे लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दे रखी थी, अब तकरीबन 4 सालों के बाद उन तमाम अर्जियों पर आज से समाअत शुरू हो गई है, जो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये लाइव प्रोसीडिंग्स है। इस मामले की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है और ये लाइव स्क्रीनिंग हो रही है। इसकी स्ट्रीमिंग आप उसको एक विंडो में देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि वहां जज साहिबान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीरें थोड़ी छोटी छोटी नजर आ रही हैं और साथ ही जो वकील हैं, जो वकील है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और ये जो हफ्ता है, जो करंट हफ्ता है, इस हफ्ते में 3 दिन इस पर समाअत होनी है और उसके बाद ये लगातार ये समाअत होती रहेगी। तो मामला काफी अहम है और मरकजी हुकूमत ने इसको लेकर अपनी तरफ से भी हलफनामा पहले ही दायर कर दिया है और तमाम जो इसके पक्षकार हैं उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने थी या जो भी इसमें एडिशन करना था वो सब, उसके लिए 26 जुलाई तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय किया था कि 26 जुलाई की शाम तक आप सब कुछ जमा कर दें। जब समाअत शुरू हो जाएगी उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिसबमिशन जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो समाअत जारी है। The interaction between these 3 constitutions in the context of Article 370, something that your lordships will have to look at as we move forward. But please keep that in mind. The reason why I say Constitution of India is applicable to the state of Jammu and Kashmir, that over time there were several orders issued, constitutional orders from time to time, which were incorporated in the Constitution of India is applicable to Jammu and Kashmir. सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 खत्म करने के बारे में दायर अर्जियों पर समाअत कर रही है सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच। इस मामले पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और खुसूसी हैसियत को बहाल कर देगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गैर आईनी था, असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, तमाम नजरें हैं, डे टू डे हियरिंग है, कैसे देखते हैं इसको और क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट से? पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी पूरी दुनिया में हैं उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसकी जो उसको अपहोल्ड करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ वो पूरा इंसाफ करेंगे और जस्टिस देंगे उनको, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को 5 अगस्त 2019 में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता कि एब्रोगेट किया गया, हालांकि एब्रोगेट नहीं है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 वही है जहां था और आज ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ पर बात हो रही है, सो सिंपल आज ये कोर्ट देखेगी कि जो कदम 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के थ्रू उठाया गया क्या वो सही था कि गलत था। मरकज की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और तमाम तरह की बातें कही गई और ये भी कहा गया कि ये दलील भी दी जाती है कि
जो कुछ हुआ है वो आइन के दायरे में हुआ है, जो पावर्स हैं असेंबली मौजूद नहीं थी, गवर्नर्स के जरिए वो उन पावर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आइनी तौर पर ठीक है? यही तो आइनी तौर पर गलत हुआ है, यही तो बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि जो उनने तरीके अपनाए, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया, वही तो केस है। आप ये नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आइनसाज असेंबली कहते हैं, उसी को सिर्फ ताकत है इस 370 को वो अमेंड करे, उसको खैराबाद करे, उसको रखे। दैट्स द ओनली बॉडी जो डिसाइड ये कर सकती है। बाकी किसी के पास कोई, हमारे मानने में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और जो हमारे साथ, हमारे पुरखों के साथ हिंदुस्तान के जो मॉडर्न इंडिया है उसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर को दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही 370 सामने आया है। और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, यही तो केस है। एंड आज पूरी, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं एंड दे विल गिव जस्टिस। तो साफ तौर पर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और जो 35A का मामला है, जो खुसूसी हैसियत थी जम्मू कश्मीर रियासत की, उसको बहाल करेगा। यह मानना है मुजफ्फर शाह साहब का। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। Together with any territories of any native prince or chief under the suzerainty of Her Majesty exercised to the Governor General of India. You will note here, Mother, Jammu and Kashmir is not part of this. In 1925, Maharaja Pratap Singh was succeeded by Maharaja Hari Singh, the last ruler of the princely state of Jammu and Kashmir. And on the 20th of April 1927, the expression state subject was defined in the state subject definition notification dated April 20, 1927, which was issued by Maharaja Hari Singh. This notification classified state subjects into 4 classes and subsequently became the basis for the definition of permanent residents of Jammu and Kashmir under the Constitution of Jammu and Kashmir and Article 35A of the Constitution of India. Your Lordships need not go into it because we are not really dealing with that issue, but I'm just mentioning it. On the 22nd of April 1934, Maharaja Hari Singh enacted Regulation 1 of Samvat 1991 on April 22, 1934. Wherever there is Samvat, Malad, if you take away 57 years, that gives you the year. Regulation established a legislative assembly for the state of Jammu and Kashmir called the Praja Sabha. While certain legislative functions were delegated to the Praja Sabha, the ruler, Maharaja Hari Singh, retained supremacy over all legislative, executive and judicial matters. On the 2nd of August 1935, the Government of India Act 1935 was passed by the UK Parliament. The Act established India as a federation comprising governors' provinces, chief commissioners' provinces, the Indian states which had or would accede to the Federation of India. Under Section 6 of the said Act, the ruler of Indian princely states was empowered to execute an instrument of accession, declaring that he accedes to the Federation of India, subject to the terms of such instrument. Under Section 2, an instrument of accession was to specify matters with respect to which the federal legislature would have competence to legislate for a particular state and the limitations, if any, on the federal legislature's powers to make laws or exercise executive authority over such state. Notably, as the state of Jammu and Kashmir was not a part of British India, provisions of the Government of India Act 1935 did not apply to it unless an instrument of accession was executed by its ruler in accordance with Section 6. On the 7th of September 1939, the Jammu and Kashmir Constitution Act 1939 was promulgated. While Maharaja Hari Singh retained sovereignty and supremacy over all legislative, executive and judicial functions, the Act provided the Praja Sabha to make laws for the entire state of Jammu and Kashmir or any part thereof, subject to certain conditions. Further, the said Act vested executive functions with council consisting of a Prime Minister
and other ministers appointed by the ruler. The Act also provided for the High Court, which had been established